I'm so glad to be participating in this tribal art workshop and exhibition. I thank Mr. Sudarshan Patnaik, Padma Shri Sudarshan Patnaik for this initiative, for the encouragement that he is giving to young artists, and also to FICCI for taking this initiative and bringing these artists to Dubai. This is a great platform. Dubai is the global city with over 200 nationalities. And for these young tribal artists to get such a big platform at an early stage in their career is quite significant and commendable. And as you can see, Dubai is a city which talks about sustainable development, and this is a place which will appreciate anything that we can project about Indian lifestyle, culture, which associates us closer to the nature. All the art that is on display here has an overriding theme of nature, life that is close to nature, life that is sustainable. I'm glad that Consulate had the opportunity to associate with Odisha Lalit Kala Academy to bring these artists here, and I hope this will be the first of many such initiatives that we will do in the months and years going ahead. और मैं ये पहली बार जो इंटरनेशनल आई हूँ आर्ट करने के लिए, और उड़ीसा हमारे ललित कला एकेडमी को धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग को इधर लेके आए, और हमारा जो आर्ट भी है उसका हम इधर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आज हमारा इधर एग्जीबिशन हो रहा है, और जो मेरा पेंटिंग है ये मेरे ट्राइबल पेंटिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मॉडर्न एज में लेके आ रही हूँ। तो कंटेम्प्रेरी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो वही वाला मैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में की हूँ। थैंक यू। So this is my painting. This is basically Khadia tribe. This is basically belongs to Khadia tribe, and we are here to join and showing to our Khadia tribes how they develop, because before they are living to mountain, now they are coming to normal people and they are learning many more, and this is very helpful to coming generation, means coming artist, upcoming artist, and they are learning some more of this platform. Thank you. हम लोगों ने ये जो इंडिया से उड़ीसा का जो इंडिजिनस ट्राइबल आर्टिस्ट फॉर्म है ट्राइबल आर्ट का, तो ये गांव में आर्टिस्ट लोग करते, उनका दीवार पर इस म्यूरल पेंटिंग को कैसे आगे लिया जाए, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो पाए और आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते, इसलिए हम काफ़ी ये करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी अलग अलग गैलरी में इनका शिविर किए और एग्जीबिशन भी किए। इस बार हम पहले उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से और एकेडमी के तरफ से हमने ये सोचे कि इनको कैसे बाहर का ये भी मिले, एक्सपोजर मिले। इन्होंने बाहर का एग्जीबिशन और गैलरी का जो मज़ा, कैसे अपना पेंटिंग को सेल कर सकते, कैसे डिस्प्ले कर सके, और बाहर का दुनिया इन्होंने देखे तो उनका काम का ऊपर उनका असर आएगा। तो इसलिए ये उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से ये पहली बार हमने 15 ट्राइबल आर्टिस्ट को डिस्ट्रिक्ट से, वेरियस डिस्ट्रिक्ट से 15 आर्टिस्ट को लेकर हमने दुबई में ये हयात ये में प्लेस में हमने 3 दिन का रखे थे, शिविर रखे थे, और आर्टिस्ट ने 3 दिन भी इस दौरान जो दुबई को तो थोड़ा घूमे, और इनका असर, दुबई का असर भी उनका पेंटिंग के ऊपर आया। ये एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो सका। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। Namaskar, Jai Jagannath. My name is Chanchal. I am an Odissi dancer, and I am here today in the Odisha Tribal Artist Camp, and I cannot tell you how happy I feel to see my land, my Odisha, here in the state of Dubai, in this big city, to see each artist coming and showing what is Odisha about, how the tribal is about. That's really heart-whelming to me to see. I'm so happy Sudarshan sir invited me to see more. I generally go to any modern art or any art places. We generally see the paintings there, but here when I could see a person doing it live, talking to each artist has been really nice. And more than that, to see my land, my Odisha,
here in Dubai is something very, very special to me, to bring the cultural part of our Odisha here, which we all have been trying. To see this happening here successfully by Sudarshan sir, I'm so happy to be here. Thank you. For the first time, Odisha Lalit Kala Academy and Culture Department, Government of Odisha, is organizing a tribal artist camp in Dubai, where 15 artists from the different tribal community of Odisha, and they showcase their paintings, the tribal paintings, on canvas, which is very, very different art forms, our traditional art forms. And today, Honorable CG, Bharat Sarkar, and he has encouraged to all the artists and inaugurated. This is very honor for us. And all the artists, they did excellent work on their traditional form and details there in the paintings.